हेलो दोस्तों, मैं एंट्रेंस पेपर्स के हवाले से एक और पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों ये पेपर इकनॉमिक्स का 2020 का पेपर है। दोस्तों इसका 2021 का पेपर मैंने पहले से ही डिस्कस किया है। वो पेपर आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। इसके अलावा आपको वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस पेपर मिल जाएगा और उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसी में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आपको पता है कि इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 60 मार्क्स होता है और उसके लिए आपको 70 मिनट्स दिए जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। यहाँ पर जो भी आंसर की हम डिस्कस करेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑप्शनल आंसर की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हेन द एलम इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 750 plus 20i, there is equilibrium between the supply of and demand for money when आंसर बी पर है इसका, when the rate of interest is 10% and output is 950। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, demand for money remaining constant and increase in supply of money results in आंसर ए पार्ट है राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द एलएम करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एग्रीगेट सप्लाई इज टोटली प्राइस इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड विल ए पार्ट इंक्रीज प्राइस लेवल बट नॉट आउटपुट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू वेल्थ इफेक्ट एडी करो स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज बी पार्ट lower prices increase the value of money holding and consumer spending increases। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, demand pull inflation is the result of a rightward shift in AD करो। उसके बाद 6th क्वेश्चन, who is the author of the book A Treatise on Money? आंसर सी पार्ट है J.M. कीनेस। Question number 7, if the country's policymaker continuously use expansionary monetary policy as a tool to hold unemployment below the natural rate, the long run result would be C part an increase in the rate of inflation। उसके बाद question number 8, an increase in the aggregate demand is more likely to lead to demand pull inflation if B part aggregate supply is perfectly inelastic। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, when the intrinsic value of money is equal to its face value it is called C part full bodied money। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, to which one of the following does the liquidity trap correspond? B part इसका आंसर है मनी डिमांड फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, people will tend to convert money into bonds if they think the rate of interest is going to fall, यानी ए पार्ट। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। In the Fisher's equation MV is equal to PT where V represents B part velocity of circulation of money। Question number 13, which institution is known as soft loan window of the World Bank? आंसर बी पार्ट है IDA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट आर द पार्ट्स ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, when RBI wants to reduce reserves in the banking system it will D part sell government bonds। Question number 16, what are gilt-edged securities? B part securities issued by government। Question number 17, the rate of growth of an economy mainly depends upon D part all of the above, यानी the growth of labor force, the proportion of national income saved and invested, the rate of technological improvements,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अनएम्प्लॉयमेंट created by some long-term changes in demand or technological conditions in an economy is known as CPOT, structured unemployment. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे. The Economic Survey of India is the flagship annual document of APOT, Ministry of Finance. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, which of the following committees is related to doubling the farmers' income? अशोक दलवाई कमिटी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, if nations terms of trade is 2, its partners terms of trade will be D part 1 by 2. Question number 22. The exchange rate is kept the same in all parts of market by A part exchange arbitrage. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23. Ricardo's law of comparative advantage is based on B part labor theory of value. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24. Tariffs are an example of A part and expenditure switching policy. चलेंगे 25 क्वेश्चन पर. A mismatch between revenues and expenditure responsibilities of a different level of government is termed as. बी पार्ट इसका आंसर है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26. इफ द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ अ टैक्स डिक्लाइन with an increase in the tax base, it is called B part regressive tax. उसके बाद 27 क्वेश्चन. The first point of contact of a tax is called C part impact. उसके बाद 28 क्वेश्चन. Public goods are characterized by B part non-rivalry and non-excludability. उसके बाद 29 क्वेश्चन. If X0 is the level of economic activity which can be pursued without inflicting damage to the environment, then X0 is called B part ecological threshold. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30. Garbage disposal is A part good. 31 question. In a situation where a positive externality is present, which one of the following conditions hold B part social benefits greater than private benefits? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर. The exclusive privilege to use an asset is called C part property right. उसके बाद 33 क्वेश्चन. The book Poverty and Un-British Rule in India is written by C part दादाभाई नौरोजी. उसके बाद 34 क्वेश्चन. Who first adopted a scientific approach to measure national income in India? D part V.K.R.V. Roy. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35. According to estimates of C.N. Vakil, the drain of wealth from India to England during 1834 to 1939 amounted to D part. उसके बाद 36. As per the estimates of Dadabhai Naoroji, India's per capita income in 1867 to 68 turned out to be B part rupees 20 per annum. उसके बाद 37 question. Indian Green Revolution is the most successful in A part wheat and rice. चलेंगे 38 question पर. Industrial Policy Resolution 1956 divided industries into B part 3 categories. उसके बाद 39 question. Who recommends the MSP and issue prices? C part Commission of Agricultural Costs and Prices. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40. Who introduced the जमींदारी system? आंसर सी पार्ट है लॉर्ड कॉर्नवेलिस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41. फॉर ए curvilinear demand function of the firm Q is equal to AP, the price elasticity of demand will be given by
डी पार्ट यानी -B. 42 question. A fall in the price of commodity holding everything else constant results in and is referred to as C part an increase in the quantity demanded. उसके बाद question number 43. Reservation price is B part the maximum amount a person would be willing to pay for a good. चलेंगे 44 question पर. If the inverse demand curve is a linear function P of Q is equal to A minus BQ, then the marginal revenue is given by A part A minus 2BQ. उसके बाद question number 45. If the marginal utility of the last unit of good X consumed is twice the marginal utility of the last unit of good Y consumed, the consumer is in equilibrium only if A part the price of good X is twice the price of good Y. उसके बाद question number 46. If the MRS XY for individual A exceeds the MRS XY for individual B, it is possible for individual A to gain by giving up B part Y in exchange for more X from individual B. उसके बाद question number 47. Indifference curves are downward sloping because of the assumption of C part more is better. 48. If Johnny likes homework H but hates exercise E, which of the following might best represent his utility function for homework and exercise? B part U is equal to H by E. चलेंगे हम 49 क्वेश्चन पर. The expansion path of the production theory is analogous in the consumption theory to the C part इसका आंसर है इनकम कंजप्शन करो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50. Which one of the following curves does not have a U shape? B part AFC करो. उसके बाद 51 क्वेश्चन. If MRTSLK equals 2, then MPK by MPL is C part 1 by 2. उसके बाद 52 क्वेश्चन. For a cost function given by C is equal to 50 plus 5 times Q square, the MC at Q is equal to 3 will be B part 30. 53 question. The best or optimum level of output for a perfectly competitive firm is given by the point where D part MR equals MC and MC is rising. 54 question. The market demand curve for a perfectly competitive industry is QD is equal to 12 minus 2P and the market supply curve is Q is equal to 3 plus P. The market will be in equilibrium if D part P is equal to 3 and Q is equal to 6. उसके बाद चलेंगे 55 क्वेश्चन पर. As per marginal productivity theory of distribution, a firm should employ units of a factory up to a point where C part MP is equal to the price of the factor. उसके बाद 56 question. When the output of a firm increases, its average fixed cost D part declines continuously. उसके बाद 57 question. The ratio of change in investment to change in income is called B part accelerator. उसके बाद 58 question. By definition, the marginal propensity to consume D part all of the above, यानी ये सारे इसमें शामिल है. इनको भी आप एक बार रीड कीजिए. उसके बाद 59 question. The difference between GNP and GDP, gross national product और gross domestic product is D part इसका आंसर है net factor income from abroad. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 and last question. When a linear
consumption function undergoes a parallel shift downwards. The investment multiplier will seaport remain unchanged. दोस्तों ये था इकोनॉमिक्स का 2020 पेपर। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।